Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand it. I don't understand it. I don't understand it. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. A very good evening. Welcome to Cruise Control. Well, after a couple of hiccups, we are back again with a live stream. To be honest, it's a chill stream. Well, it's me, Shubham, and with me, I have Aparup. And with Aparup, we have our special guest, Mr. Devanjan, Manchester United fan. Mr. Dev. And although Manchester is not in Europe right now, but still he's here with us for the discussion of UCL. So yeah, we are very thankful to you, Devanjan. Well, Aparup, round of 16 fixtures. What do you think? No, first let him speak because he's not in Europe. So I think it's better like if he just go, if we can go ahead, man. भाई मुझे कोई गमछा दो, मैं अपना मुंह ढकना चाहता हूँ। मतलब इतना शर्मनाक बात, नहीं नहीं ग्रुप से निकल जाता है ऐसा टीम और जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। छी, 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 छी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई ऑल्सो सपोर्ट यूनाइटेड, पर हाँ, ये shouldn't have gone out of the group stage at least, मतलब दो आंसू अभी अभी टपका। नाइस। नहीं, हाँ, ये तो खैर है, अभी दैट्स द फैक्ट। इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है रिगार्डिंग यूनाइटेड। Rather, let's focus on the other things right now. Is the like UCL round of 16, I guess. And round of 16 में जो मैचेस है, वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ मैचेस। कोपेनहेगन है मैनचेस्टर सिटी के साथ। So this is, I think, this I don't know. People are not rating this fixture as probably a high rated fixture. But मुझे क्यों नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि I don't know. I may be terribly wrong over here, पर Copenhagen may just provide an upset. नहीं मैन सिटी। तो मतलब यहाँ पे जैसे कि ये कुड बी द अपसेट ऑफ द सीजन हो सकता है, इसमें। आई डोंट नो। ये जस्ट मैंने बोला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। दैट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? ये मुझे ऐसा लग रहा है Obviously, I कि mean Copenhagen आई are थिंक playing really well. I mean, I don't know their history, but probably they are here for the first time in हाँ, होम championship. ग्राउंड में तो वो अच्छे ही खेल रहे हैं, राइट? नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि होम ग्राउंड में दे आर गुड। मतलब होम ग्राउंड में दे प्लेड 3 मैचेस अगेंस्ट 3 वेरी क्वालिटी साइड्स ऑफ यूरोप। Right, एक था यूनाइटेड, एक था बायर्न म्यूनिख और एक था शायद गैलाटासराय, राइट? right. These 3 teams, ये टीम खेल चुका है ऑलरेडी होम में एंड प्रोबेबली डिड नॉट गेट डिफीटेड एट होम इन यूसीएल ग्रुप स्टेज एज फार एज आई रिमेंबर। कोपेनहेगन बायर्न के साथ भी उन लोगों ने शायद ड्रॉ ही किया था, 1-1 ऐसा Right, कुछ स्कोर लाइन right, हुआ था, right, right, right. मे बी रॉन्ग। बट हाँ, मुझे तो ये तो दैट्स द थिंग। मतलब सिटी जब उनके घर में जाएगा तो क्या रिजल्ट वहां पे होगा, दैट आई डोंट नो। बट हाँ, it Hmm. may get, मतलब City can get an upper edge in this fixture, right? Just probably the fact that the second leg is going to be played at Etihad. बिल्कुल. I mean, So yeah, this City have the upper hand there, but obviously Copenhagen can upset their season because Copenhagen is very clinical in their home ground. So I don't know. हाँ I बिल्कुल। mean, हाँ, माने this could be a upset of the season, but obviously it's Manchester City. It's Pep Guardiola. We all know what he is capable of. So yeah, हाँ, Etihad anything and everything is very possible here. वो Guardiola है, that is also very बिल्कुल. important. और अभी डी तो ब्रॉनर भी वापस आ गया। हाँ, very important. very important. De Think Bruyne and also Haaland that both are Haaland back. is also back. हाँ,
तो अभी कोपेनहेगन के लिए तो चाह पे इस साल का अगर कोई मैच अपसेट हो सकता है, आई थिंक इट इज लाज़ियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का भी फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि नेपोली वर्सेस बार्सिलोना सबसे बड़ा अपसेट होगा। वो तो बार्सिलोना हार जाएगा। Such confidence, man. तो Oh my God. moving on. Well, Full confidence in Barcelona. moving on to the Oh most my- successful club in Europe, Real Madrid against Leipzig. Well, Aparup, Jinx मत I'm कर leaving दे it to यार, you. ये What do स्टोरी you से think? jinx मत कर दियो। दोनों मतलब मुझे पता नहीं, डर लगता है, यूसीएल में डर लगता है। डरने की कोई बात है ही सच नहीं। में, सच में। एक बार की नहीं, मुझे लगता है बाकी टीम को तो ज्यादा डर लगता है रियल मैड्रिड का नाम सुन के। नहीं, वो बात है। आई हाँ, ये तो फैक्ट है। But if you look into statistics against German team, Real Madrid do play well. So as per statistical fixture, so I don't think कि रियल मैड्रिड को कोई इतनी तकलीफ होगी ये मैच जीतने में, एंड दे आर राइट नाउ टचवुड इन द फ्लो। वो अभी जीत ही रहा है उसकी, दे आर गोइंग गुड विद देयर डोमेस्टिक सीजन, वहाँ पे भी वो टॉप में ही है अभी। राइट। सो आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए उतना कुछ अभी कॉन्फिडेंस भी है प्लेयर्स में कि वो लीग में भी जीत रहे हैं तो यूसीएल में भी दे विल डू गुड। दे शुड। लेकिन लाज़ियो बायर्न म्यूनिख, आई थिंक दिस सीजन बायर्न म्यूनिख इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर देयर कैपेबिलिटी। उन लोग का जैसा टीम है वैसे वो लोग खेल नहीं रहा, लीग में भी आई डोंट थिंक दे आर इन द टॉप राइट नाउ। And this just enables or highlights the fact that Bayern is not playing at their best, and they have Galatasaray and Copenhagen in their group, and still this team does not qualify to the next round. How is it even possible? ये कैसे हो गया यार? की बात यहाँ पे ये एक्चुअली फैक्ट है। दिस बायर्न इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिल्कुल सही बोला इसने, दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बायर्न एट ऑल। मतलब मैंने तो देखा नहीं है लास्ट 3 to 4 years, 5 years पकड़ लो यार। When have you last seen Bayern Munich this vulnerable? हाँ, ये तो हम यहाँ। Right. I mean the consistency which they maintain, okay, throughout every competition, okay, even though if they can't score goal, they don't allow the opposition to score. So that's a big quality of them, right? I mean, at least they are able to see the match off till the end. So being team who belongs to, I mean, a league where there is no I mean not big competition like EPL obviously, but still they are EPL के consistent. करीब तो है ही नहीं, बुंडेसलीगा मतलब it is not even close to EPL. Right. But the consistency in Europe is just admirable because especially the background from which they belong, I mean the league in which they play, in compared to that in Europe, their consistency is really admirable. Right. ये तो सही बात है यार, बायर्न का ये स्पेशलिटी। Obviously. They are threat always. They are always a threat, I think. एकमात्र टीम है जिसका ये कैपेबिलिटी है कि वो अगर 2-0 डाउन है तो वो 7-2 से भी जीत सकता है। हाँ, ये तो है बिल्कुल यार। ये this only बायर्न। Obviously. फिलहाल एक टाइम में हम देखते थे कि वो कर रहे हैं, पर अभी पता नहीं कि इस सीजन होगा कि नहीं। तो हाँ, लाज़ियो एंड बायर्न इज आल्सो इंटरेस्टिंग। हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग एंड PSG coming to PSG and Real Sociedad. I don't know absolutely what to make out of this match. मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। I See have the absolutely current PSG situation, right? What is their current strengths and weaknesses according to you? स्ट्रेंथ उनका तो एक ही चीज है, मतलब दे हैव एम्बापे, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दे रिलाई ऑन। इवन when मेसी जब भी था PSG में, तब भी लाइक एम्बापे वाज गिवन द मोस्ट इंपोर्टेंस, आई गेस। राइट। तो देख यार, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं रहे इस टीम के साथ। दे हैव ऑल द फायर पावर, दे हैव फाइनेंस, और एक और प्रॉब्लम है कि वो लोग जिस लीग पे अभी खेल रहे हैं, हाँ, उस लीग में भी बहुत कम कंपटीशन है। मतलब आई गेस द कंपटीशन तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, नेचर ऑफ फुटबॉल, द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज नॉट अप टू द। हाँ, ये तो है। और ये तो बड़े भैया ने भी बोल दिया। हाँ, ये तो हाँ, ये इसका तो मतलब एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया था, राइट?
सॉरी। यस 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 यस। तो इसीलिए उन लोग को अगर मेन जहाँ पे वो लोग हर टाइम फुटबॉल खेल रहे हैं वहां पे अगर कोई कंपटीशन खेलने को ना मिल रहा है, दे आर नॉट टेस्टिंग द टफनेस जो दूसरे टीम फिर भी बहुत टेस्ट कर जाते हैं। तो ये जी आई डोंट थिंक अगर ये मैच जीतेगा भी तो ज्यादा दे वोंट गो दैट फार इन द चैंपियंस लीग। आई डोंट थिंक सो। रियल सोसिएदाद से फिर भी जीत सकते हैं लेकिन हाँ फिलहाल अभी ऐसा मतलब वो थ्रेट नहीं है कि थ्रेट हाँ नहीं है। कि वो पीएसजी चैंपियंस खेल लीग रहा है तो जीत ऐसा जाएगा थ्रेट है। ऐसा अभी हाँ उन लोग ये तो फैक्ट के है। अंदर Yeah, कुछ obviously, I mean, we ऐसा all know कुछ PSG is a club which is driven by two people. Number one, the Sheikh. Number two, Mbappe. So yeah, I mean, हाँ there are yes mainly two driving forces in PSG. So I mean, if one of them moves away, so obviously this club will crumble down. I don't know whether they will be able to qualify to Europe or not. Probably they will, but I don't think so. They will qualify more than the round of 16. So I mean, yeah, the current PSG situation is a bit speculative, and obviously the Mbappe situation. Oh, और एक चीज क्या लगता है भाई, एम्बापे आएगा? आएगा? ये नहीं पता ये नो वन नोज नो वन नोज। एम्बापे ने इतने बार धोखा दिया ना। एम्बापे खुद उसको नहीं पता है एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। उसको अगर खुद पता होता कि वो क्या करने वाला है हाँ, तो वी वुड हैव नोन। ही मतलब अभी मुझे नहीं लगता है कि he has decided yet as of now। हाँ And the एम्बापे amount of money Real Madrid was offering in the last season was huge. हाँ ये तो है। रियल मैड्रिड इतना ज्यादा बीटिंग किसी प्लेयर के लिए नहीं करता। Maybe he has to go to obviously. a fact that Mbappe, when he comes to Real Madrid, he will be like one of the stars playing in the team. But in like PSG, he's like the only ओनली star. स्टार। तो ये तो एक डिफरेंस है। और रियल ये मैड्रिड में पहले आके अभी बेलिंगहम जो खेल रहे हैं उसको उतना इम्पोर्टेंस मिलेगा भी नहीं नहीं इनिशियली। इम्पोर्टेंस तो मिलेगा। ही इज अ नाइस प्लेयर पर ऐसा नहीं है कि ही विल बी द अल्टीमेट प्लेयर। उसको लाइक बेसिस पे टीम बनाया जाएगा ऐसा नहीं है। मुझे हाँ, नहीं लगता है कि ऐसा रियल होगा। मैड्रिड किसी को इम्पोर्टेंस नहीं अब देता। वही मतलब हाँ रियल मैड्रिड का टीम हाँ ये तो I mean, yeah, I mean the पेरेस forward crisis, like they are right now. I'm not underestimating Joselu, but obviously the class of Joselu and Mbappe is just worlds apart. So I हाँ mean, right, the only thing that is missing right now in the puzzle of Real Madrid is a proper forward. Okay, so obviously if Mbappe comes in place of Joselu, well, it would be a treat to watch. दैट्स ट्रू बट विनिशियस वो तो So I mean, yeah, I mean after the PSG, we come back to Germany, Dortmund versus PSV. So what do you think of this particular one? ये दैट मुझे लग रहा है कि थोड़ा इजी पड़ गया। इजी पड़ गया मतलब आई डोंट नो पीएसवी करंट सिचुएशन बट Hmm. डॉटमंड शुड विन दिस आई थिंक। दे शुड मतलब Should, ये yeah, तो टफ कुछ है नहीं लग रहा है। You do not know in a Champions League match what can happen actually, so you can right. never underestimate any team। बट पर आई आप थिंक आई आल्सो थिंक द सेम। ये डिबेटेबल है पर ये डॉटमंड शुड विन दिस। मतलब ये जीत जाना चाहिए इनको। पर टेक्निकली मुझे जो मतलब जो फैसिनेटिंग फिक्सचर जो लगता है यूसीएल की जिस राउंड ऑफ 16 जो पूरा जो हुआ है आई थिंक नेपोली बारसा इज दैट ऑल राइट दैट इज Right. डेफिनेटली अ माउथ वाटरिंग फिक्सचर। तो Hmm. इसने बोल दिया कि बार्सिलोना इज गोइंग टू लूज। तो ये अभी नहीं पता। ये आई डोंट नो एज ऑफ नाउ। पर इंटर मिलान एंड एटलेटिको मैड्रिड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। That exactly. I was about to say that. Yeah. I दैट mean, इज वेरी after इंटरेस्टिंग। ये अच्छा मैच होगा। you know, the hierarchy of the big matches in the round of 16 for this year, I would keep Inter versus Atletico at the top. At the top. After that, I would keep Napoli and Barcelona. Okay. हाँ बिल्कुल यस यस। So, I mean, because just because Barcelona, the current situation in which they are in right now, I don't think Napoli would, I mean, they would defeat Napoli. So, I'm not underestimating them. They are a club of huge stature, but still, I don't think Barcelona will be able to cross this round because Napoli are in great form. And obviously, I mean, in spite of the, Osimhen speculation which was going on in Napoli just a couple of months ago. In spite of that, I don't think so. Like Napoli would be eliminated from the round of 16.
So in the मतलब तू Dortmund बोल रहा है PSV, बार्सिलोना इसकी तरह भी बोल रहा है बार्सिलोना इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम राउंड ऑफ 16, राइट? I think so. I think so. I mean, if I'm being totally honest, I think so. They should be eliminated. If not, then very good. You are welcome. Okay. Thank you for eliminating Napoli. And kudos to Napoli, right? Because they, हाँ, played Real Madrid in their groups, and now इन they're द facing Barcelona, the two यस, Spanish greats, राइट। I ये mean, भी in हाँ, both the ये भी rounds, एक right? फैक्ट है, ये भी राइट, दिस एन इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली। इंटर मिलान, हाँ नहीं, इंटर मिलान तो नहीं, नापोली इज फेसिंग टू लाइक स्पेनिश जायंट्स, ये तो है। लेट्स सी, मतलब ये नापोली बार्सा का क्या होता है, डोंट नो। मतलब दिस इज अ माउथ वाटरिंग फिक्सचर अलोंग विद इंटर मिलान एंड एटलेटिको मैड्रिड, एंड कमिंग टू पोर्टो एंड आर्सेनल, मुझे लगता है कि Okay. शुभम शुड बी जस्ट गेट टू बी स्पीक टू बोल Yeah, I भाई, बट mean, आर्सेनल शुड बी। देखो भाई, Sir, ये फिक्सचर तो आर्सेनल को जीतना चाहिए, ठीक है। द आई मीन द जीतना चाहिए दिस तो ईयर दे आर जीतेगा। चाहिए। हाँ, आर्सेनल जीतेगा। हाँ, जीतना तो चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वुड हैपन, स्पेशली बिकॉज इट्स आर्सेनल. Okay, so I mean, although I mean they should win this, but obviously, I mean Arsenal, as we know, have bottled a lot of leagues and UCLs also in the past. They should win it, but obviously, provided if they continue the form in which they are in at the Champions League. So I don't know, right? They would whether they would continue this form or not, but obviously they should win. And this year in the Champions League, they scored a lot of goals against Lens. They probably scored 6 goals or so. But obviously, I mean, yeah, they should win the league. I mean, sorry, they should win this particular round and progress into the quarters. So, I mean, well, both of you, I'm asking this question to both of you, right? So, what are the 8 teams who you are picking who will progress into the quarters? ये तो इट इज डिफिकल्ट अभी, ये कुछ कुछ देयर आर सम मैचेस जिसमें विनर प्रेडिक्ट करना अभी लाइक इट विल बी हार्श आई थिंक। कोपेनहेगन सिटी तो मुझे पता नहीं, जैसे मैंने बोला कि आई डोंट नो अबाउट दैट रिजल्ट, पर हाँ, Hmm, इफ कीपिंग इन दैट माइंड कि सिटी हैज ऑल द स्ट्रेंथ नाउ विद केडीबी एंड हालांड बैक, तो मे बी सिटी इस साइड से लाइप्जिग एंड रियल, आई एम कंसीडरिंग रियल शुड विन इट अगेंस्ट hmm, लाइप्जिग, आई थिंक सो, आई थिंक सो। They have a habit of bottling in like the earlier rounds if they face a weaker opponents. We have seen that in the past. right. Ajax को जब फेस किया था तो they lost to Ajax very badly. तो Hmm, हाँ, तो होता है रियल के साथ, पर अभी देखते हैं, मतलब they should win it against Leipzig. They should. That's right. the thing. PSG Sociedad, PSG firepower maybe can overcome Real Sociedad, I guess. मतलब Sociedad भी, I guess their मतलब Spanish positions I don't remember exactly, पर कुछ ज्यादा ऊपर वो है नहीं मुझे लगता है Hmm, Sociedad. hmm, hmm. Yes. So PSG should win that. Lazio Bayern की जैसे इसने बोला, अभी इसका भी ना तू ही प्रेडिक्ट कर भाई, आई डोंट नो। Like, देखो भाई, Bayern को तो they should win. Like, it should be an interesting match. Okay, Bayern should win. The current condition of Bayern right now is similar to that of Arsenal. They are, I know, they are playing really well, but their final after the final third entry, the final finish is not there. So that's the issue which Bayern is facing right now, along with Arsenal. Well, I don't know, like when will they able to convert those chances, because I still remember in the Manchester United game against Bayern Munich. Okay, Bayern Munich have probably had 8 to 10 confirmed chances of goal, and they probably took only one or two. So I mean, yeah, the final finish is not there right now. Maybe because of the forward issue which Germany is facing, along with Bayern Munich. As we know, the issues which Germany face are similar to that in Bayern Munich. So I don't know whether that issue will be resolved or not. But yeah, it's let's leave it to the Bayern coach Thomas Tuchel. And what do you think about the Dortmund PSV? Dortmund should qualify. हाँ, जैसे कि मैंने बोला डॉर्टमंड शुड विन इट, क्या लगता है डॉर्टमंड जीत जाएगा ना, आई थिंक। डॉर्टमुंड हाँ, जीतेगा। डॉर्टमंड शुड विन दिस, Dortmund should win it. डॉर्टमंड विल विन दिस आई गेस, डॉर्टमंड शुड। हाँ, And इट्स the दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई right. आई कैनॉट से, मुझे आई नहीं पता। थिंक एथलेटिको मैड्रिड जीत जाएगा। एटलेटिको आई वेरी थिंक सो। Okay. डिफिकल्ट, मतलब मुझे पता नहीं।
ये क्योंकि बिल एटलेटिको मतलब मैड्रिड अभी अच्छा खेल रहा है, दे आर परफॉर्मिंग गुड। I would like it would give I would give the upper hand to Inter right now क्योंकि because इंटर यार वो तो सीरिया में टेबल टॉप में बैठे हैं, राइट? exactly that's why I'm giving the upper hand तो to Inter right now. इंटर मिलान तो हाँ, लेकिन इटली के बाकी जो टीम है ना, दे आर नॉट प्लेइंग अप टू देयर मार्क। हाँ वो तो है, वो तो डेफिनेटली मतलब हाँ हाँ वो मतलब तो वो ठीक है लेकिन ये obviously in the Inter versus Atletico Madrid one I would keep Inter in the top give the Inter upper hand obviously Napoli and and Barcelona Inter game also made the finals last season of UCL right against Manchester City, दैट्स ट्रू। and तो their team hasn't changed that much. Okay, हाँ so I वो तो mean this सही season खेल रहे also they should हैं। progress to the semis probably. I हाँ don't know. हाँ वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं यार। इंटर मिलान कैन डेफिनेटली गो। Okay, now coming to Napoli Barcelona, I'm pretty sure Napoli will qualify. नापोली तो But ये पता है, मुझे that's पता not है। a question right आई now. आल्सो डोंट, ये सच्ची में नहीं पता, आई डोंट नो बिकॉज़ नापोली अभी फिलहाल लीग में दे आर नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल और नाइस पोजीशन, आई मस्ट से। वेयर इज Obviously, व्हाट। नो दैट इज डेफिनेटली ऑलराइट, पर नापोली शायद 8 या 9 में है, बट लास्ट सीजन दे वर एट द टेबल टॉप, दे right, वन द सीरीज, सो दैट्स अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 8, ये right. बहुत ज्यादा डिफरेंस है मुझे लगता है। बट बार्सिलोना थर्ड है एंड दे कैन, मतलब चांस तो है फिलहाल, पर नापोली के Obviously, पास मतलब इट्स अ क्वेश्चन फॉर देम वेदर दे विल बी एबल टू प्ले द यूसीएल आल्सो नेक्स्ट ईयर, मतलब उनका पोजीशन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है अभी, आई गेस 8 होगा, पर इफ लाइक नापोली डजंट विन द चैंपियंस लीग probably they won't be able to play the Champions League next season because they won't be able to qualify. So we have to come in top four, right? इसीलिए तो बोल रहा हूँ नेपोली जीतेगा। अच्छा, मतलब you are banging on Napoli to win the Champions League. Oh my God! वो तो रियल मैड्रिड जीतेगा। अरे नहीं नहीं, अभी मत बोल यार, वहाँ पे बैठा है आर्सेनल। अरे आर्सेनल भाई आर्सेनल के अभी का बारे में फाइनल। कुछ मत बोलो भाई ठीक है उसके बारे में अरे ये मैन राउंड सिटी में कहाँ खो गया? आर्सेनल और रियल मैड्रिड का फाइनल होगा और तुम दोनों लड़ लड़ के मर जाओगे मेरे लड़ लड़ सामने। के मर अरे जाएगा, हाँ बाप रे सही सही बाप सही सही। वर्चुअल फाइट होगा देखा जाएगा वर्चुअल वॉच अलोंग करेंगे उस दिन, वॉच अलोंग करेंगे वो तो अगर वचन होता करना ही है पड़ेगा तो। हाँ तुम। हाँ, वो तो वॉच अलोंग watch करेंगे। along नहीं beat along हाँ वो throw बीट along अलोंग होगा। throw along तो प्लेयर्स का मतलब फेस मेरा तेरा फेस रहेगा, ये रेफरी है। हाँ, मैं विसल मारूंगा। oh god okay oh so I mean yeah these are the the teams which should qualify to the next round now coming to yet another fixture which just happened yesterday it was not any fixture from a league it is not any fixture from any sort of a competition or any big trophy or any big competition well it's a friendly so then why are we discussing this the reason are very simple because of two greats Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Wherein Ronaldo didn't play. He was in the bench enjoying, and Messi just, went for a walk in the park for just a couple of minutes. So, yeah, I'm talking about Al Nassr versus Inter Miami. A thumping victory from Al Nassr and absolute battering and slaughtering from Al Nassr. And I mean from the thumbnail it's very clear right the reaction of Cristiano Ronaldo was just admirable and he was just enjoying the match to a great extent while Talisca was giving his celebration was performing his celebration the hat-trick hero there right now so yeah so what do you think there were several watch-alongs for Al Nassr and Inter Miami going on throughout YouTube, just for seeing the two greats, the two goats, okay, alongside each other. But they just threw water all over it. So what do you say? एकदम मोए मोए केस हो गया Moe moe पूरा। हो हाँ गया हाँ, रोनाल्डो बेंच में भी नहीं था, वो स्टैंड पे था। वो स्टैंड में था। I mean, वो just imagine, right? We are doing a watch along for Al Nassr and Inter Miami. We don't know any fucking thing about these two clubs. Okay, Af- now we only know two players. Okay, and both of them are not playing. So what should we do?
So yeah, I mean it's a very unfortunate मतलब हाँ incident. मुझे एक अल बात नसर समझ में नहीं अल आई, नसर का अगर अरे अल नसर का टीम इज रियल नाइस एंड इंटर मायमी भी यार सुआरेस खेलता है उसमें सुआरेस Right, खेलता है, बुस्केट्स खेलता बुस्केट्स भी है। है शायद right, हाँ right. जॉर्डी अल्बा भी है, जॉर्डी अल्बा they भी है. are playing नहीं, मैं बात मेरे, तुम जो बोला ऐसा नहीं है कि आई दे आर एम, इन देयर प्राइम फॉर्म अभी हाँ डेफिनेटली उनका एज हो चुका है फॉर श्योर ये तो है पर हाँ नहीं, मेरा बात वो नहीं है, तुमने जो बोला वो एकदम सही। अगर रोनाल्डो और मेसी नहीं खेल रहे हैं तो इस मैच का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या बिल्कुल. मतलब बनता है इस मैच का? I mean, Ronaldo was just enjoying, warming up the bench and just seeing Messi right there, sitting just in हाँ front of him, and it was just like I'm in a different class. I'm in a different level. I don't play. I coach. और Okay. और आई थिंक ये उसको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, और मुझे लगता है कि उसने ही प्लेयर को बोला था कि ऐसा सेलिब्रेशन करना गोल मारने के बाद। वी कैन डू दैट आई थिंक सो। प्लेयर को जाके बोल रहा है कि यार तू कुछ करो पर ये मेरा सेलिब्रेशन जरूर कर देना हाँ, गोल मार के और यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू माय सेलिब्रेशन गोल कैसे मारना है ये मैं नहीं बताऊंगा तुमको जस्ट सेलिब्रेट लाइक मी यू जस्ट फिगर इट आउट एंड डू द सेलिब्रेशन। सही है बिल्कुल, बिल्कुल. ये क्या क्या स्कोर है ये? और यहाँ पे ना, लेट ये मी टेल यू लैपोर्ट वन का थिंग। गोल देखा एक्चुअली लैपोर्ट का गोल देखा यहाँ पे मतलब लाइव तो मैंने ये नहीं देखा मैच. भाई साहब ये हाईलाइट में जाके देख लेना यार मतलब दिस गोल वाज सुपर यू विल एंजॉय दिस गोल आई एम Okay. सेइंग टू बोथ आई मीन यू बोथ शुड जस्ट वॉच दिस गोल लैपोर्ट ये Interesting. मतलब कि कैसे गोल हो गया मुझे पता नहीं यू वॉच द हाईलाइट यू विल जस्ट गेट टू कैसे नो था? मतलब कुछ बाइसाइकिल वाइसाइकिल था क्या? नहीं यार खुद के हाफ से उसने शॉट मार दिया यार अरे लॉन्ग शॉट को बाप रे. हाँ he shot it from his own half Oh God. Interesting. देखना पड़ेगा। लैपोर्ट का गोल ये टेनिस का हैट्रिक भी हो गया यार टेरिस का हैट्रिक हो गया. वही तो हैट्रिक हीरो, वही तो सेलिब्रेशन कर रहा था ना उसका. गॉड यार और तुम्हारा यहाँ पे ना, आई थिंक यहाँ पे जो प्लेयर्स का दिखा रहा है कि गोल गोल गोल, 3 गोल 1 गोल, यहाँ पे उसके नीचे सिर्फ ऐसा आना चाहिए था कि मेसी फीफा बेस्ट प्लेयर, ऐसा आना चाहिए था। कैसे जीत गया यार बंदा? वो तो देख भाई, वो डिबेट में तुम मत ही जाओ, ठीक है? अगर वो डिबेट स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, आज पूरा रात पूरा खत्म हो जाएगा. लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा सुबह तक, ठीक है? वो डिबेट अगर एक बार स्टार्ट हो गया, अरे भाई गुड्डे बाप रे बाप. 6-0 से हारा अल नसर से। पर ठीक है, चलता है. ऐसा नहीं कि ये तो कि इट्स आफ्टर ऑल अ गेम ऑफ फुटबॉल, अ फ्रेंडली गेम ऑफ फुटबॉल हाँ एज ये वी से. फ्रेंडली भी है इट्स अ एग्जैक्टली हाँ फ्रेंडली इट्स अ गेम ऑफ फ्रेंडली फुटबॉल, मैच फ्रेंडली मैच जितना एज वी से. ये तो नहीं, उसका एक्सक्यूज तो है नहीं नहीं, लेट मी टेल यू, ये जो फ्रेंडली मैच, यहाँ पे जो वो अगर मेसी गोल मारता, हम्म. तो मारा है लास्ट मैच नहीं स्कोर्ड नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जो फ्रेंडली में ये जो हाँ गोल मारता है, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में जो ये गोल मारता है, हम्म, वो तो उसका जो अवार्ड मिला उसका तो गोल रिकॉर्ड में काउंट होगा। बिल्कुल होगा होगा ना? बिल्कुल होगा, फिर होगा. बिल्कुल इम्पोर्टेंस है होगा. इस मैच की, इसमें जो हारा इम्पोर्टेंस है। मेंस बेस्ट अवार्ड देख भाई, ये फ्रेंडली को देख के बैलन डोर भी अगले साल उसको दे सकता है, ठीक है? नहीं आई थिंक ही डिजर्व्स इट ऑलरेडी ओके, ओके. I mean, आई थिंक we need to do a separate live stream for that. What more he deserves, right? एलन को नहीं मिलेगा मेसी को मिल जाएगा क्या ही अच्छा, बोलूं. अभी एक बात बोलो, अभी जैसा फुटबॉल अभी चल रहा है एट दिस हम्म, वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, हम्म. क्योंकि मिड सीजन हो गया, तो एट दिस वेरी पॉइंट अगर वैलेंडियर किसी को देना चाहिए, किस प्लेयर को देना चाहिए? वेरी डिफिकल्ट टू से इसीलिए हम बोला Very, इफ द very, very इफ difficult actually. इफ द देख भाई, एक ही प्लेयर मेरे सीजन, दिमाग में आ रहा है, एक ही प्लेयर, जस्ट वन, जूड बेलिंगहैम, और कोई हाँ नहीं. मेरा दिमाग में वही सेम दैट्स जूड द सेम नहीं बेलिंगहैम, हाँ वही मैं बोलने जा रहा था, जूड और कोई बेलिंगहैम। नहीं. अभी तो फिलहाल वही है
Exactly. I mean, obviously, in if the last end of the season, if Haaland can do a 50 goal in half season, then obviously he will take the Ballon d'Or without any doubt. 100%, 100%. But otherwise, Jude should take it. And I don't know if he takes it here, should he be like the youngest player to win the Ballon d'Or, or was it ये Michael तो Owen? मतलब पता नहीं है, दिस इज ये इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, ये we need to see into it. अभी ये तो When पता did नहीं, पर ये देखना होगा When did Michael Owen win the Ballon d'Or? यंगेस्ट यंगेस्ट किसको यार, मतलब रोनाल्डो को कब मिला था? नहीं बड़ा था। रोनाल्डो ना इतना जल्दी नहीं, जल्दी देख, एक बार माइकल ओवन देखना पड़ेगा, माइकल ओवन कब जीता था। क्लोज, आई मीन माइकल ओवन ही होगा ज्यादा। 2001 में दिखा रहा है 2001 यार, 2001 में उसका एज देखना होगा अभी। 2001 में जीता ना, राइट, हाँ अभी क्या एज है देखते हैं। अभी तो देखना होगा। अभी 44 इयर्स एज है, ठीक है, हाँ अभी 44 है। तो 44 है, तो आज से ले 23, ये 21 के करीब कुछ होगा, ऐसा 21 के करीब कुछ होगा शायद। 2021 ही होगा ना। हाँ 2021 ही होना चाहिए। वही He देखो, can be the youngest. He can 1979 be इज 100%. He has won that age 2021, so he definitely can be can the be youngest, राइट because that राइट is really early to win the Ballon d'Or at least. राइट एग्जैक्टली। तो हाँ ये हो सकता है। This is interesting यार, ये I didn't have an idea. I just did not have an idea. उस टाइम कौन सी टीम में खेलता था माइकल ओवन? लिवरपूल 2021 में लिवरपूल ना? लिवरपूल शायद। 2001, हाँ। लिवरपूल में था। माइकल ओवन, फर्नांडो टोरेस, ये दोनों ही तो लिवरपूल का एकदम टॉप नॉच फॉरवर्ड थे ना। वही फर्नांडो जावी टोरेस अलोंसो भी था। चेल्सी में जाके पूरा एकदम फ्लॉप कर गया। जावी अलोंसो भी तो था। जावी अलोंसो भी था, राइट। Can he be the next manager for Liverpool then? लिवरपूल का एक प्लेयर था बैरोस बोल के, मुझे अच्छा लगता था बहुत। बैरोस, राइट। अच्छा खेलता था। तो अपूर्व, व्हाट वर यू आस्किंग राइट नाउ? ये बनेगा जावी अलोंसो लिवरपूल जो का, बोला इसने अभी मैनेजर, क्योंकि वो तो खेल चुका है लिवरपूल के लिए। He has already played for Liverpool. right. I तो mean, yeah, I mean, लिवरपूल का he बन has गया ना। already played for Liverpool. He has already played for Real Madrid. So, I mean, it हाँ will be a challenge for him also. I mean, he loves both अगर the club. लिवरपूल का जावी अलोंसो मैनेजर बन गया, हाँ, लिवरपूल विल बी अनदर थ्रेट, अभी जैसे सिटी है। बिल्कुल वैसा तो थ्रेट है, एंड वी आल्सो नो लाइक ही लव्स रियल मैड्रिड। वी ऑल सॉ हिज सेलिब्रेशन आफ्टर रैमोस, you know, did, I mean, last minute goal against हाँ Atletico हाँ, Madrid. ये तो Okay, he just fully went off the bench, not bench, the spectator stand, and he just ran in with the team to celebrate, right? So passion all over there, Xavi Alonso. So I mean, yeah, I mean, we need to post another video for that. I mean, up to 2025, Ancelotti will be there, right? हाँ हाँ 25 तक है। So after 25, there will be a challenge. वो अभी, पर ये मुझे क्या लगता है ना, क्योंकि वो लेवरक्यूसन मैनेज कर रहा है अभी, Hmm. तो मैनेजिंग थोड़ा लेवरक्यूसन देन लेवरक्यूसन एंड लिवरपूल को मैनेज करना बिग मतलब सेम नहीं है। वहां पे एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही रहेगा अगर ही वो तो ठीक इफ है। ही इज मूविंग टू लिवरपूल, क्योंकि यहाँ पे देखो यार लेवरक्यूसन को अगर कुछ मिल जाए तो इट्स ग्रेट कि चलो मिल गया, हमने बायर्न को डिफीट कर दिया, और हम चैंपियन हो गए। लिवरपूल पे पर जाके कोई लिवरपूल में जीत अगर नहीं उसको पाया। जाना है, Right. you have to deliver trophies with them because the current form they are in right now, and मैनेजमेंट भी शायद चेंज होगा लिवरपूल का, जो तू उस दिन Hmm. मुझे बोल रहा था। Hmm. 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 तो अंडर मैनेजमेंट स्टेप्स डाउन आई गेस, तो फिर जावी अलोंसो ने प्रॉब्लम हो सकता है, वी नेवर नो, बिकॉज वहां पे कंपटीशन भी कुछ हटके ही है, कुछ अलग ही है। Probably they are fighting a competition right now in Bundesliga, पर हाँ Premier League is a different thing. So you just cannot compare Premier League to any leagues. That's the best. Obviously, obviously. I mean, the same Ajax which Ten Hag took to semi-final, isn't it? Where हाँ, they lost, where they, you know, even defeated Real Madrid, right? Real Madrid, Juventus दोनों को उन्होंने दोनों हराया ने था हराया इस था। season. So obviously, I mean, being a manager of that quality, and we are seeing him in Manchester United also. I mean, for some reason, he's Right. not clicking. He's not हाँ clicking there. So I mean, yeah, it's all about, you know, the luck. It's all about, you know,
the current management scenario and the managerial decisions which the club takes. ये It तो हाँ, takes, ये तो मतलब हाँ। हाँ, या वो जो पॉलिसीज रहता है ना, वो मतलब कोचेस को दे हैव टू अबाइड बाय इट, बी इट इफ दे लाइक इट और नॉट, दे हैव टू अबाइड बाय इट. So yeah, it affects different coaches differently. It's We are not living in an era where it was the whole club is controlled by one manager, like the era of Arsene Wenger or Sir Alex Ferguson, where the whole club, whole decisions, whole managerial decisions, be it coaching, be it the player availability, or be it scouting any players, everything was done by the coach individually. So I mean, we are not in that era anymore. So here everything has been divided, and the whole managerial perspective has been subdivided into several categories, subcategories. So yeah, everything needs to be encountered throughout the club levels, from top to the bottom, everything, and everyone has to abide by it. Otherwise, he or she has to leave the club, which we all saw in several instances and situation. Well, I mean, जैसे कि मैंने बोला था, ये यूसीएल का जो अभी सिचुएशन है, वी आर कमिंग टू द राउंड ऑफ 16 time where the different 16 clubs will be competing against each other. From there, 8 clubs will be going into the next round, and obviously we are hoping that this season also we will get a chapter of a Champions League from all the clubs which are participating in this year also, and we wish the very best to all of them. We are Kudos actually to approaching the best time of football in a particular like uh, season. मतलब Exactly, यही, this is exactly, the crunch time. Einstein. You have to exactly, exactly, perform now in order You to have get to buckle something. up. You have to perform exactly. now in order to get something. This is the ideal और situation. सब में, नॉट ओनली इन चैंपियंस लीग बट लीग हाँ, में भी लीग में भी हाँ, you have to keep up the momentum and all. पर्टिकुलर उन लोग का अपने अपने कप्स में भी, नेशनल कप्स में भी. तो बिल्कुल, हाँ, they ये have to बैकअप buckle जो up टीम and का रहता है इजी हो जाता है उनके लिए, बट हाँ ये तो मतलब जैसे भी है, जो भी है, फाइट तो करना है. दैट्स द ब्यूटी बिल्कुल, ऑफ फुटबॉल. बिल्कुल, मतलब जैसे भी है, they have to buckle up and start doing what they do the best, all the clubs, and we wish the very best to all the clubs, be it our rivals, be it our biggest rivals, be it our हाँ, ये clubs तो also. हाँ, बिल्कुल. Okay, भाई राइवल्स के बिना फुटबॉल में मजा मजा ही थोड़ी नहीं आता आएगा है. यार, मजा ही नहीं बिल्कुल, आएगा. बिल्कुल, उसी में तो मजा है. बिल्कुल. If after defeating a अभी particular team, देखो भाई, अगर we उसके we सपोर्ट को wish तुम the very best, बोलना and I पाओ know instead of like winning that match. यही तो we मैच we है. all wish the very best to all the clubs, and I know that Devanjan especially will be wishing Manchester City the very best for them. बिल्कुल, So ये तो ये उड़ाओ सपोर्टिंग सिटी. उड़ाओ, मजा उड़ाओ, सिटी इसका मजे फेवरेट है, उड़ाओ, पहले से ही है सपोर्टर ऑफ सिटी. मजे उड़ाओ. मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. नहीं नहीं, बोलने का वक्त आएगा भाई, मेरा भी अभी बोलने का वक्त नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आएगा, हमारा वक्त था पहले, ठीक है, अभी अपना चला टाइम गया है, आएगा. ठीक है, नहीं आएगा, नहीं, ये फिर फालतू आएगा. बकवास कर रहे. ये तो बकवास कर रहे. इसका तो एकदम चिल्ड आउट है, उसको पता है जीतेगा. नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी बात बिल्कुल है नहीं. ये मतलब अब 90 मिनट हो गया फिर भी चिल्ड आउट रहता है. मैं पूछा क्यों, क्या हो गया, तो जीत जाएगा अभी, अब जीत गया. तो ऐसे ही होता है. तो इसीलिए इसका तो मैं छोड़ ही देता हूँ. लेकिन आर्सेनल भी नहीं आई नहीं, वो थिंक भी विल डू थैंक यू गुड. टू मैनचेस्टर यूनाइटेड आई गेस. मतलब रियल ने तो ये जो फर्गी टाइम में जीतना सीखा है. आई गेस फर्गी हैज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन दैट आल्सो आई गेस. सॉरी. अभी मतलब बात जो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि फैक्ट्स बोला जा रहा है या ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है. ये तो हमें भी नहीं पता, हम बस बोल रहे हैं. सही बात. Anyways, like we enjoyed quite a lot. Thank you so much, Devanjan, for हाँ, joining थैंक us. यू. We are very, very thankful to you for joining us and providing us with your much valued time. And all the subscribers and to whoever is watching this live stream, thank you so much for joining with us. We are at the end of our stream right now. We will be joining very soon. We'll be, we have a plan for doing a watch along on 4th of February. The much awaited encounter between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium, straight from our नहीं, वो channel करना Cruise है, वो Control. करना होगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड मैच. वो करना है. That's a banger of a match, and I'm very waiting. I'm waiting eagerly for it. So obviously, yeah, करेक्ट, I mean, बिल्कुल करेक्ट. yeah. Well, that's it for now from Cruise Control.
It's me, Shubham, and we have Aparup and Devanjan. Thank you so much for joining. Do like, share, and subscribe to our channel. Stay fit, stable, stay fine, stay healthy. Goodbye. Peace off. Goodbye.